Good morning, friend. Today I am going to discuss with you different type of research. First of all, we go for the definition of research. Progress in any domain of knowledge is not possible without a research. So, research is important in every field in our society as a social living. The term research is a formation of two words, re, which means again, and search means to find out. So, simple understanding, research means to find out, to gain the knowledge. According to the Advanced Learner Dictionary, research is a careful investigation or inquiry, especially to search for new fact in any branch of knowledge. According to the Creswell, research is a process of steps to collect, analyze the information to increase our understanding of a topic or issue. Nine types of research. Generally, there are six types of research: objective types, outcomes types, logic type, process type, inquiry mode type, idea or concept type. Objective types again divide into the four categories: descriptive, correlational, exploratory, experimental. Outcomes type three types: pure applied action, logic, deductive, inductive, process, quantitative, qualitative, inquiry model, structure, unstructured, idea, concept, conceptual, empirical. Today, I am discuss only the one type, that is outcome basis research. Outcome basis research again classify into the pure, applied, and action. First, we shall discuss the pure research or basic research. A research which is focused on generating the fundamental principle and theoretical understand about the basic human and other natural process. Pure research involves the developing, testing the theories and hypotheses that are intellectually challenged to the researcher but may or may not have practical application at the present time or in the future. Thus, such work often involves the testings of hypotheses containing the very abstract and specialized concept. Basic research is a research approach that is entirely theoretical, aimed at improving or expanding the knowledge base of a particular field of study. It focuses on knowledge for its own sake, and it's primarily driven by curiosity and need to explore the unknown. It is a systematic investigation set to achieve a better and more detailed of understanding of a research subject or phenomena, not to solve the specific problem. Next, applied research. Applied research, a research which is focused on answering the real world practical question to provide the relatively immediate solution. Example, current problem of teaching learning due to pandemic situation, or it can be used for policy formulation, administration, understanding of a phenomena. Applied research is designed on focus on providing the practical solution to a specific problem. It is a form of investigation that entails solution-oriented inquiry into a phenomena, a field of study, or research subject, generally employing the empirical methodology. In many cases, we found that applied research is follow-up research design of pure research because it further investigates the outcome of pure basic research in order to validate these findings and apply them
to create the innovative solution to a specific problem. With the help of diagram, try to understand the pure research, applied research and action research. प्योर रिसर्च किस टाइप का रिसर्च बोलते हैं? जो रिसर्च यूनिवर्सली सब लोग एक्सेप्ट करे, मीन्स पूरा संसार में कोई इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क न करे और सिचुएशन अनुसार ये रिसर्च चेंज न हो, उस रिसर्च को हम क्या बोलते हैं? प्योर रिसर्च। जैसे एम मीन्स मीटर, केजी, सेंटीमीटर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगा। जो कहीं भी चेंज ना हो उस चीज को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। तो प्योर रिसर्च में जो भी रिसर्च वर्क होता है उसे यूनिवर्सल माना जाता है। व्हेयरएज अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? ये सोसाइटी और सोशल प्रॉब्लम और एक सर्टेन एरिया का कवर करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अप्लाइड। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया, रशिया, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सबका क्या है? अपना अपना एक करेंसी है, सबने अपना अपना करेंसी का एक वैल्यू दिया है। जैसे इंडिया का रुपीस है, बांग्लादेश का टाका है, यूरोपियन कंट्री का डॉलर है। तो ये सब क्या हो गया? जो अपने अपने जगह अनुसार उस चीज को वैल्यू देते हैं, उस रिसर्च पे ओरिएंटेड होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। जब वही रिसर्च जब एक छोटे एरिया को कवर करता है या सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम का कवर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्शन रिसर्च। जैसे किसी तरह का टाउन में प्रॉब्लम आ गया, सिटी में प्रॉब्लम आ गया, एक गांव में कोई प्रॉब्लम आ गया, जैसे किसी गांव में कोई टाइप का बीमारी निकल गया, किसी गांव में कोई समय का पैंडेमिक सिचुएशन आ गया, तो जब हम कोई से छोटा सा एरिया लेके रिसर्च करते हैं और छोटा सा प्रॉब्लम लेके रिसर्च करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में हम सिंपल सी बोलेंगे, अगर यूनिवर्स प्योर रिसर्च है तो कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, ऐसा कॉन्टिनेंट क्या हो गया? अप्लाइड हो गया, और स्टेट और विलेज क्या हो गया? एक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, difference between the pure research and applied research. Pure research is the addition to a knowledge universal in nature, whereas applied research is existing problem and solution specific. Pure research is discovery or invention, whereas applied research is a innovation and application. Mostly academic and subjective approach, practical using solving the problem and objective method of inquiry. Extensive in nature, intensive in nature. Knowledge of complex analysis, simple analysis procedure are required. प्योर रिसर्च में सैंपल क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। व्हेयरएज अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? यूनिवर्स का ना सम पार्ट ऑफ लोकेलिटी और कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सफिशिएंट एंड स्मॉल साइज होना चाहिए। कंक्लूजन में बी इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइजेशन, फाइंडिंग द लोकल एंड स्पेसिफिक। इंटेंसिव ट्रेनिंग इज नीडेड फॉर in research methodology, limited training is needed. I will give the some example of pure research. How does the human memory work? इंसान का दिमाग किस तरीका से काम करता है? इसके लिए क्या करेगा? आपको हर एक एरिया में जाना पड़ेगा, हर एक एरिया का अपना खाना एडेप्टेशन दूसरे है, लाइफ स्टाइल दूसरा है, तो उनका जीने का तरीका भी दूसरा होगा। जब जीने का तरीका दूसरा होगा तो मेमोरी वर्क करने का भी तरीका दूसरा टाइप का होगा। सिमिलरली, हाउ द चिल्ड्रन एक्वायर द न्यू लैंग्वेज, हाउ डू द पैनिक अटैक हैपन, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। व्हेयरएज अप्लाइड रिसर्च में क्या है? स्टडी टू बिल्ड द स्टूडेंट इंटरेस्ट इन रिलीजियस स्टडी, स्टडी टू बिल्ड स्टूडेंट इंटरेस्ट इन रिलीजियस स्टडी। जब हम रिलीजियस स्टडी का बात करते हैं तो क्या है? रिलीजियस डिफरेंट टाइप का है, हर एक स्टेट अपना अपना रिलीजियस बनाता है, हर एक कंट्री अपना, तो वहां पे स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? एक रिलीजियस में दूसरा होगा,
अगर उसी के अनुसार दूसरा रिलीजियस में कम और ज्यादा हो सकता है। स्टडी टू इम्प्रूव द क्लासरूम इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर? व्हाट आर द वेज टू इम्प्रूव द productivity in the workplace? That practitioner face in their school or society and community. Now, what are the features of action research? Situational and problem solving perspective, intervention of the real world, adaptation of alternate practice, immediate problematic situation, self-evaluative, collaborative, and participatory. Stephen Kamin has developed the simple model of cyclic nature of typical action research that consists of four steps: planning, acting, observing, and reflecting. Sometimes in different types of examination, they will ask the what are the steps of action research. So there are four steps of action research, that is planning, action, observation, and reflection. Similarly, in this way, they can move. What is the planning? The first thing to do is to analyze the problem scientifically in the specific perspective in which the problem has emerged. Planning covers the initial reflection. Planning entails the identification of the problem and change a teacher can make to overcome the problem. Action. Research has to administer the tools to collect the data and information. Systematically, analysis has to be done. Observation. The detailed observation, monitoring, and recording enable you to report your finding to the other. Reflection. Once the result has been obtained, analyzed, and conclusion is drawn. With the help of cyclic planning, action, observation, reflect. Now, what are the advantages of basic research over the applied research? Basic research results in the acquisition of new knowledge and it also expands the existing knowledge, while applied research does not lead to the acquisition of new knowledge. Findings from the basic research have been predominantly responsible for breakthroughs in different fields of study, while findings from the applied research are primarily useful for solving the specific research problem. Hence, basic research is universal in nature, while applied research is limited in nature. Advantage of applied research over the basic research. Applied research help organization and individual to solve the specific problem, unlike basic research that is simply focused on expanding the knowledge without providing the solution to the existing problem. This, however, does not negate the fact that findings from the basic research are useful to proper solution to the problem. Unlike basic research, which is somehow subjective in its approach, whereas applied research is objective method of inquiry. Typically, applied research is unbiased because it arrives at outcomes by subjective empirical evidence to standardize the scientific procedures, and this makes it more valid research method. Now in next class, we shall discuss about the qualitative and quantitative research. Thank you so much.